this is exercise 7B, question number 1. If P is prime, then we have to show that 2 into P minus 3 factorial is congruent to minus 1 mod P. So 2 into P minus 3 factorial is congruent to minus 1 mod P. Right? Now you see what is given to us. P is prime. So can I apply Wilson's theorem? So Wilson's theorem क्या बोलती है बेटा? What will come with Wilson's theorem, beta? P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod. Yes, Anshu, P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P. But हमें P minus 3 पे जाना है. So you see P minus 1 factorial को हम कैसे लिख सकते हैं? P minus 1, P minus 2 and P minus 3 factorial. अब देखो आपको क्वेश्चंस में क्या होता है ना, you have to decide by looking at the question. अब आपको क्या चाहिए? आपको 2 into P minus 3 factorial चाहिए, बाकी टर्म्स नहीं चाहिए. तो if I concentrate on this bracket, मुझे यहाँ से 2 मिलेगा. What I did, I opened this number, I opened this fraction, whole of this term by multiplying with this bracket. So you see पहले P से multiply हो जाएगा. So P into P minus 1, P minus 3. बेटा fine? Yes, ma'am. फिर multiply हो जाएगा minus 2 से. So minus 2 into P minus 1, P minus 3 factorial. Right? This is congruent to minus 1 mod P. Now, if you see इस term में P आ गया, so इसका remainder कितना हो जाएगा P के साथ? 0. बेटा fine? Yes, ma'am. और जो दूसरी टर्म है वो क्या बन जाएगी? minus 2. अगेन P minus 1 का रिमाइंडर कितना होगा P के साथ? -1. P minus 1. So see P का रिमाइंडर P के साथ 0 होगा. So what it will be? -1. -1. Is it fine? तो P minus 1 की जगह मैंने -1 लिख दिया. 2 को नहीं छेड़ा because 2 हमें चाहिए. So you see minus 2 into -1 will become 2. So 2 into P minus 3 factorial is congruent to minus 1 mod P. यही proof करना था. Is it clear बच्चे? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now if you see question number 2 is show that for any integer n greater than, so n is any integer and n is greater than 1, then you have to show that n is prime if and only if n minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p mod n. ये स्टेटमेंट कहीं देखी नहीं लग रही? n minus 1 factorial is n is prime if and only if n minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p. किसकी स्टेटमेंट है ये? Wilson's. This is nothing but Wilson's theorem. अपने कन्वर्स के साथ ही मांगा हुआ है इसने. So this way is n prime. You have to prove that n minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod n. And this is nothing but Wilson's theorem. If P is prime, then P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P. So this is Wilson's theorem. और कन्वर्स क्या बनेगा? If n minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod n, you have to prove that n is prime. So this is nothing but the converse of Wilson's theorem. So Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wilson's theorem. तो ये दोनों हमने प्रूफ कर लिए हुए हैं. Is it fine, बच्चे? Yes, ma'am. Right. Yes, so ma'am. this question number 2 is nothing but एक पार्ट में वो आपसे Wilson's theorem का प्रूफ मांग रहा है और दूसरे पार्ट में वो आपसे कन्वर्स ऑफ Wilson's theorem का प्रूफ मांग रहा है. दोनों प्रूफ हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं. Let us go to question number 3. So question number 3 says if n is composite, then show that n minus 1 factorial plus 1. So n minus 1 factorial उसमें 1 add कर दिया. So that is not a multiple of n. So that is not a multiple of n, right? So as a mathematician,
our nature is जो हमसे मांगा है हम we will do the reverse, right? So let us assume what? Let us assume what? हमें शो करना है कि n is not this number, n minus 1 factorial plus 1 is not a multiple of n. So let us assume this is a multiple of n. So suppose n minus 1 factorial plus 1 is equal to n into some integer. Beta, is it fine? Is it fine, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमें कॉन्ट्रडिक्शन लेके आनी है. तो कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा 1, जब 1 दिख जाए तो 1 को एक तरफ ले आओ. Right? So now what is given to me? Given is n is composite. n is composite number. इसका मतलब n का कोई proper divisor होगा. So this means what? There exists an integer b. So b is a proper integer. So b is greater than 1, less than n. So ना तो b 1 के equal है, ना b n के equal है, such that b divides n. b divides n. अब अगर b n को divide करते हैं तो b will divide nl also. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Right? Yes, अब ma'am. again if you see, b जो है वो n से छोटा है. इसका मतलब b is less than or equal to n minus 1. बेटा b n से छोटा है, right? So obviously b will be less than or equal to n minus 1. तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से क्या आ गया कि जो n minus 1 factorial है, जब आप उसको expand करोगे, this will be what? n minus 1, n minus 2, n minus 3, so on up to b. यहाँ कहीं बीच में b आएगा. आएगा बेटा? Yes, ma'am. We will get some b in between because b जो है वो n minus 1 के equal है या उससे छोटा है. तो n minus 1 factorial में वो सारे numbers आ जाते हैं जो इस range में होते हैं. Is it fine? Yes, ma'am. Right? So यहाँ से क्या आ गया? b will divide n minus 1 factorial. अब यहाँ पे आप कह रहे हो b divides nl और यहाँ पे आप कह रहे हो b divides n minus 1 factorial. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिल जाएगा हमें? b इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है बेटा? व्हाट इज nl minus n minus 1 factorial? 1. तो इसका मतलब क्या हुआ? b divides 1. 1. बट 1 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1 itself. So means b is 1. बट ये तो Yes, ma'am. कॉन्ट्रडिक्शन है बिकॉज आपने क्या लिया था? b क्या था? Greater than 1. B is Greater than 1. So you got a contradiction and your supposition is wrong. जो भी आपने assume किया था वो गलत assume किया था. So you see this number is not a composite. It's not a multiple of n. So this whole proof is written here, right? So you just understand the proof. Beta, is the proof clear, all of you? Yes, ma'am. Any doubt in any step? Okay, there is no doubt. Let us move forward. Let us take question number 4. Show that n raised to power p plus n into p minus 1 factorial is congruent to 0 mod p. N raised to power p plus n into p minus 1 factorial is congruent to 0 mod p.
यस। अब देखो मुझे इसमें दो चीजें दिख रही है, मुझे एक में इसमें पावर भी दिख रही है n की और एक मुझे फैक्टोरियल भी दिख रहा है. So यहाँ से I get a clue कि I have to use both the theorems. Fermat's theorem also. So by Fermat's theorem से क्या होता है बेटा? n raised to power p चाहिए मुझे. So any number raised to power p is congruent to. बेटा clear है? Yes, ma'am. Right. Also by Wilson's theorem, p minus 1 factorial is congruent to. -1 mod p. बट अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखो तो आपको n चाहिए साथ में, n चाहिए p minus 1 factorial के साथ. तो अगर मैं दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दूं, so n into p minus 1 factorial is congruent to minus n mod p. But is it fine? Yes, ma'am. So you see, if you add first and third equation, what you will get? N raised to power p plus n into p minus 1 factorial is congruent to 0 mod p. 0 mod p. Beta, is it clear? Yes, ma'am. यही प्रूफ करना था हमें. Yes, ma'am. Okay. Now notice next question. Find the remainder when 15 factorial is divided by 17. Find the remainder when 15 factorial. इसके दो पार्ट्स हैं, दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है. You can do yourself. So you see 15 factorial is divided by 17. तो प्राइम है. विल्सन्स थ्योरम से हमें पता है p minus 1 factorial किसके कॉन्ग्रुएंट होता है? -1 mod 17. बेटा देखो अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन होता 13 factorial is divided by 17, तो यू सी जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, जिस नंबर से आपको डिवीजन लेनी है, मॉड आपने उस नंबर का लेना है. इज इट फाइन? तो जिस नंबर से आपको रिमाइंडर निकालना है उस नंबर को आपने मॉड में लेना है. तो यू सी यहाँ से 17 है, सो 17 minus 1 कितना हुआ? 16 factorial is congruent to -1 mod 17. बट हमें 16 factorial नहीं चाहिए, हमें 15 factorial चाहिए. So 16 factorial को हम लिख सकते हैं 16 into 15 factorial is congruent to -1 mod 17. Right? So if you see 16 into 15 factorial, अब देखो 16 का रिमाइंडर कितना है 17 के साथ? -1. So -1 into 15 factorial is congruent to -1 mod 17. So both the sides there is negative sign. We will multiply with minus sign on both the sides. So 15 factorial is congruent to 1 mod 17. So what is the remainder when 15 factorial is divided by 17? 1. 1. Is it? 1. Is it fine? Yes, ma'am. Okay. Next question. So let us see what is next question. Okay. So next question is question number 6. So question number 6 says for any prime p, show that, so p is prime, so we have to show n plus n raised to power p into p minus 1 factorial is congruent to 0 mod p. N plus n raised to power p into p minus 1 factorial is congruent to 0 mod p. Any idea, बच्चे? Any hint how we should solve this?
अगेन यहाँ से आपको कोई हिंट मिल रहा है? मैम पी की पावर है और फैक्टोरियल भी है। p की पावर और फैक्टोरियल दोनों है, इसका मतलब हमें एक चीज तो क्लियर है कि एक तो हमें फर्मेट्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। सो अगेन बाय फर्मेट्स थ्योरम n raised to power p is congruent to n mod p, right? और similarly p minus 1 factorial is congruent to minus 1 माइनस mod p पी। by Wilson's theorem. अब देखो p minus 1 factoriयल के साथ आपको n to the power p चाहिए, राइट? आपको n to the power p चाहिए, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ n to the power p से मल्टीप्लाई कर दें, यस मैम। right? So what do you get? n to the power p into p minus 1 factorial is congruent to माइनस एन टू द पावर पी mod p. अब अगर आप देखो ये जो कॉन्ग्रेंस है, ये जो फर्स्ट कॉन्ग्रेंस आपने लिखी थी, हमें पता है कॉन्ग्रेंसेस आर सिमेट्रिक, congruences are symmetric. So can I write this as n is congruent to n raised to power p mod p? लिख सकते हैं? यस मैम। They are symmetric. चाहे a is congruent to b लिखो, चाहे b is congruent to a लिखो. So now if you see, if I add this congruence number 1 and I add this congruence number 2, so what I get? क्या आ रहा है बच्चे? n प्लस n टू द पावर p इंटू p माइनस वन फैक्टोरियल। So 1 plus 2 implies, so what I get? N raised to power n plus n raised to power p into p minus 1 factorial is congruent to, क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में? Zero mod p। बेटा is it fine? यस मैम। All of you, ma'am. right? In your notes, if you can see, I have just tried another way. So just to show you, okay, this is just different way of writings. So you see Wilson's theorem हमें क्या कहती है? p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p. तो यहाँ से क्या आ गया? p divides p minus 1 factorial plus 1. And similarly, तो मैंने क्या किया, मुझे सिंस np चाहिए था p minus 1 factorial के साथ, तो इस पूरी टर्म को n to the power p से मल्टीप्लाई कर दिया. So what do you get? p divides n to the power into p minus 1 plus np, right? So this हमने डिवीजन वाली फॉर्म में लिखा है इसको, वहां कॉन्ग्रुएंसेस में लिखा है. अब फर्मेट्स थ्योरम से क्या होता है? n raised to power p is congruent to n mod p. So means p divides n to the power p minus n. So what I did, right? If you subtract this from this, so what do you get? N to the power p, n to the power p cancels. So what do you have? P divides n to the power p minus 1 plus n. So means this is congruent to 0 mod p. Beta, is it clear? Yes, ma'am. Okay, so just we have used the division concept. There I have tried to do it using the congruences concept. Everything is totally the same. Okay, now all of you will do 1 minute, right? So all of you first try this question of your own. Let us see how much we understand. Right? So I'll just give you a start. So what you have to show, that if p is an odd prime, you have to prove that the GCD of p factorial and p minus 1 factorial minus 1 is equal to 1. So start, I'll give you. हमें पता जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते थे, हम GCD को d ले लेते थे. Let the GCD of p factorial and p minus 1 factorial minus 1 is equal to d. तो बेटा d की GCD की डेफिनेशन क्या हुई? So GCD क्या करता है?
D divides D P divides factorial. D divides P factorial and D D divides divides P P P minus minus 1 1 factorial minus factorial 1. minus 1. अब आपने यहाँ से किसी तरीके से ये शो करना है, so you have to show that D is equal to 1. कहीं ना कहीं से कुछ कैंसिलेशन होगी. हिंट ये देखो, यहाँ P फैक्टोरियल है, यहाँ P minus 1 फैक्टोरियल है. So try to make this P factorial and do. Take 2 minutes. All of you, please try this question. All of you, try the question. All of you. So any clue? What should you do? मैम P factorial को लिख सकते हैं P into P minus 1 factorial. Okay. See. और फिर वहाँ फिर क्या करोगे? फिर मैम D divides either P और P minus 1 factorial. Okay. मैम फिर अगर उसको D divides P minus 1 factorial और D divides P minus 1 factorial minus 1 करे हो, मतलब ले, तो दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, वहां से D divides 1 आ जाएगा. दोबारा बताओ. Let me solve it with you. So what you are saying is, so आपने बोला आप करोगे, if I am not wrong, so D divides P into P minus 1 factorial. यही बोला आपने? Yes मैम. Yes. And D divides P minus 1 factorial minus 1. फिर उसके बाद आप कह रहे हो, so यहाँ से क्या आया? D divides P और D divides P minus 1 factorial. ठीक है. तो अब आप कह रहे हो कि D divides P minus 1 factorial है, right? So you are saying if D divides P minus 1 factorial, so then obviously D will divide ये जो दूसरी टर्म है, ये वाली. So D will divide इन दोनों का डिफरेंस. So P minus 1 factorial minus 1 minus P minus 1 factorial. So you see it means what? D divides minus 1. So obviously D is positive integer, so D is 1. यही कह रहे हो आप? Yes ma'am. तो ये तो आपने very good, perfect start. So आपने ये केस लिया है, if D divides P minus 1 factorial. Now, but you see, there can be second case. If D divides P, then what? अगर D P minus 1 factorial को divide करते, then you are done. Very good. Then D is equal to 1. But D can divide P also. Yes ma'am. Then what? Anybody else? What? She has given a start. What if D divides P? What if D divides P? बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Right. So my next question is, what if D divides P? Again, you see, अगर कोई नंबर P प्राइम है, P को डिवाइड करते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हुई? What will be the possibilities? प्राइम नंबर के डिवाइजर्स कौन से होते हैं? One or number itself. One or the number itself. So again, if D is 1, then we are done. Because हमें यही तो शो करना था, D is 1. Then यहाँ से एक और possibility आ गई, if D is equal to P. Now you see, so let me name this equation as star. Let me name this equation as star. So from star, what do you get? So from star, D is P, right? So P divides P minus 1 factorial minus 1. तो यहाँ से क्या हुआ? P minus 1 factorial is congruent to P minus 1 factorial is congruent to
1 mod P. 1 mod 1 mod P. P minus 1 factorial is congruent to 1 mod P. बट हमें तो पता है विल्सन थ्योरम से क्या होता है, हमें तो पता है विल्सन थ्योरम से क्या होता है, P minus 1 mod factorial. बट बाय विल्सन थ्योरम P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P. So यहाँ से क्या आ गया, ये नंबर इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये नंबर इसके कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू minus 1 mod P. So यहाँ से क्या आ गया, P will divide 2. But this is contradiction because P is odd prime. और odd number कभी 2 को divide ही नहीं करता. बेटा is it clear? yes ma'am So therefore D जो है वो P के equal हो ही नहीं सकता. So D is only equal to 1. Is it fine? So Yes, I have just ma'am. tried to do the proof exactly in this way. थोड़ा सा मैंने change किया है. So you see, any question can be attempted in number of ways. तो हमने क्या किया, GCD को D ले लिया, right? So again, D will divide this or and D will divide this number. अब आपने P factorial को P into P minus 1 factorial बनाया था, मैंने P minus 1 factorial को P बना दिया, मैंने इस पूरी equation को P से multiply कर दिया. So D will divide P into this number. So जब आप multiply करोगे तो क्या आ गया, so D will divide P factorial minus P, और यहाँ से है D divides P factorial. बेटा क्लियर है? yes ma'am अब अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, you get D divides P. So D divides P. So either D is 1 or D is P. So if D is 1, we have proved because यही तो हमें show करना था, D is 1. And if D is equal to P, then you have what? P divides P minus 1 factorial minus 1. So therefore P minus 1 factorial is congruent to 1 mod P. But हमें तो विल्सन थ्योरम से पता होता है P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P. तो यहाँ से क्या आ गया, 1 is congruent to minus 1 mod P और P divides 2, which is contradiction because P is odd and 2 is even. Beta, is it clear? Yes, ma'am. yes ma'am This is what I was saying in the starting. आपने मेरे से, मुझे अभी भी याद है, क्वेश्चन पूछा था कि नंबर 3 सेम लाइक कैलकुलस, और वो नहीं, वहां पे थोड़ा सा हमें स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है. यहाँ पे इफ यू नो द बेसिक थिंग्स और थोड़ी सी आपने क्वेश्चंस की सेम तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, यू विल बी एबल टू टेक द थिंग्स फॉरवर्ड. इज इट फाइन? yes ma'am And I am taking this course from last 3 years. I mean, I joined college in 2018. So I think आपके seniors में hardly 2 or 3 people might have been not